आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर का कदीम और बेहतरीन तालीमी इदारा शानदार कॉलेज सोफिया एकेडमी के ज़ेरे एहतिमाम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हुए पेडल फॉर द प्लैनेट प्रोग्राम को किया गया मुनक्किद। धनी संद्रा मेन रोड फर्स्ट ब्लॉक अश्वंत नगर सिंतन नगर बेंगलोर में वाक़ई सोफिया एकेडमी, जो कि पिछले कई सालों से पीयूसी डिग्री के स्टूडेंट्स की बेहतरीन अंदाज में रहनुमाई करते हुए अच्छी तालीम दे रही है, जहां पर पीयूसी और डिग्रीज के स्टूडेंट्स के लिए कई सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, जैसे कि CCBA, HEBA, PCMB, PCMC, BBA, BCA और BCom कोर्सेस यहां पर अवेलेबल हैं। इन तमाम कोर्सेज के साथ 100% स्कॉलरशिप्स की सहूलियात बच्चों को फराहम करते हुए सोफिया एकेडमी नई जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को शानदार तालीम फराहम करता है। सोफिया एकेडमी के ज़ेरे एहतिमाम और ज़ेरे निगरानी में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के मौके पर एक शानदार प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया। जी हाँ, सोफिया एकेडमी के ज़ेरे एहतिमाम इस कॉलेज में ज़ेरे तालीम तलबा व तालिबात PU डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स ने हाल ही में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के मौके पर नागवारा बेंगलोर में वाक़े एलिमेंट मॉल में पेडल फॉर द प्लैनेट प्रोग्राम को रखते हुए अवाम पब्लिक में साफ सफाई और कचरे के मुतालिक कई सारी ज़रूरी इंफॉर्मेशन को आम किया। बता दिया जाए कि इन तलबा व तालिबात स्टूडेंट्स ने आवाम लोगों को प्लांट्स, पेड़ पौधों की अहमियत बताते हुए ये कहा कि हर एक को अपने घर में और आसपास के इलाकों में पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उन्हें पानी डालना चाहिए, ताकि हम उनसे ऑक्सीजन लेकर एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। साथ ही स्टूडेंट्स ने अपने घर में निकलने वाली कूड़ा करकट, गंदगी को भी सही तरीके से फेंकने के अमल को भी बताया। यहाँ पर बताया गया कि हमें चाहिए कि हम गीला कचरा अलग जमा करें और सूखा कचरा अलग जमा करें और इन्हें अलग अलग करके कॉरपोरेशन की गाड़ी में डालें, यानी कि अपने घर के गीले कचरे को और सूखे कचरे को अलग अलग करके सेपरेट करके कॉरपोरेशन की कचरे की गाड़ी में डाला जाए। आइए देखते और जानते हैं इसकी मजीद तफसीलात। Very good evening, hi, hello, namaste, and a very warm welcome to all of you here today to the Elements Mall. I am MC Shubh, live with the amazing student of Sophia Academy. We are celebrating World Environmental Day right here at the Elements Mall. If you are around here and you want to give your hand or be the helping hand to protect your planet, you can walk down here to the Citrino of the Elements Hall and you can be the helping hand with the students of Sophia Academy and celebrate the environmental day. So as you know, this is the only planet which gives us life, so it's better to celebrate it right here, right now, where we have lot of activities and lot of games out here to all the people. So you can walk down here, take part in the celebration of Environmental Day with the Sophia Academy students. If there's anyone who wants to take part, can walk down here to the Centennial of the Elements Mall. So before we begin this wonderful evening, I request everyone please stand up for the national anthem. Amara Sheikh to please call upon the chief guest for this evening, Soma Shekhar. He is the PSI for Sampige Hati Police Station. A big round of applause to the chief guest here who joined us today this evening. And he is along with us here to celebrate the World Environmental Day. So, good evening. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಸೋಫಿಯಾ
ಮಿಸ್ ಅಮೀರಾ ಶೇಖ್ ಅವರು ಫೌಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಚೇರ್ ವುಮೆನ್ ಸೋಫಿಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಮರ ನೆಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಬ್ದ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡಿರೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Today and every day to respect and protect our earth every day. I will reduce water, recycle more, conserve water and energy, and the things that we do, plants and trees, and take care for land, say no to plastic, nature and helping hand. I promise to be mindful and aware, to live with love and act with love. The earth is not just a place to live, it is our home and we must give. I am a green warrior, I am a change. I will protect our planet. Thank you. Thank you, Kaushik. Happy Environment Day. My name is Zainab from Sophia P Academy. सोच सोच तू करता क्या, तेरी धरती तेरा अंबर, तुझको बस इसमें रहना, तू जाएगा क्या इसको छोड़कर, तू रह लेगा क्या इनको तोड़ के. सोच सोच तू करता क्या, तेरी धरती तेरा अंबर, तू कहता क्या तू करता क्या, यहाँ हवा और पानी है, तेरी मेरी जिंदगानी है. आज मिलकर कसम खाएंगे हम, धरती माँ को बचाएंगे हम. सोच सोच तू करता क्या, जहर को साथ लेकर चलता, क्या तू करता जो कचरा यहाँ, तेरे घर में कुछ रहता है क्या. आंखें बंद कर सो जाता है, धरती माँ को रुलाता है, पानी तो ऐसे बहाता है जैसे पर्वत खुद बन जाता. सोच सोच तू करता क्या, आज सारे कचरे को हटाना है, वचन हमें कुछ ऐसे खाना है. थैंक यू. Good evening, ladies and gentlemen. This is the big box. Let's go. I said it, you say box. Big, big, big. Fourth song. Let's go. And today is the day of the World Environment Day. We have joined here for the purpose. What is our purpose? What is our purpose today? We are gathered here for the purpose of to save our environment, isn't it? And we are celebrating this since 1974. And this year theme is Beat Plastic. What is the theme of this year? Beat Plastic. What does it mean? It means that we should avoid using plastics. Correct? And how can we save our nature? Recently, you all have heard that Meghalaya in Hyderabad, that news I think so you all have heard regarding we fight to save the forest. So, what is the purpose and what is our responsibility? What we get from nature? We get water, we get the serene environment. Serene means
a disciplined environment. If the nature is greenery and with cleanliness, of course, you save your home, you save your environment. So please make a theme strong. What is the theme of this year? Beat plastic. This is our take-home point. Okay, thank you. One and all present. जी आप पेडल फॉर प्लैनेट्स नाम से एक इवेंट कर रहे हैं, ये इवेंट का क्या मकसद है, क्या जो है किस लिए इस तरह का इवेंट किया जा रहा है? हम सबको as it is really important to know about the earth right now, what is the condition of earth right now. So we are really working on stopping the deforestation, planting the tree and making sure that we are recycling the products. That's why we are doing one event here to make sure that we are making one small awareness program with our students, so people would know that what things can be recycled and what can be reused, so it will not get for waste. तो इससे मतलब क्या फायदा होगा लोगों को और मकसद क्या है इस चीज का? चीजें वेस्ट नहीं जाएंगी, हम उसे दोबारा यूज कर सकेंगे, एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय कम होगा और हम हमारे फ्यूचर जनरेशन के आने वाले लोगों के लिए अर्थ अच्छा जगह बना के जाएंगे. My name is Afnan Bhasa. I'm studying in second PUC in Sophia PU Academy. Our college is located in Tanisandra. Today's purpose is giving awareness to the people about environment, to save things, save trees, save water, because there is 1% water left in the whole world. So ensure to save the waters, and the college provides various activities. We do each and every program, each and every event like this in open areas, so that our students should get interactive with everything. They should not be only in studies, they should get everything about the college, about the world. They teach us everything, how to get forward and get to success. Good evening, my name is Ishtiyaq Mustafa. I found this event going on in Elements Mall now. It was really good and I got to know about the Sophia Academy. The Sophia Academy is providing a lot of good degrees and even opportunities for the needy peoples. They are offering so much scholarships and some discounts for the good needy peoples who are not able to pay the full fees. Yeah, going according to the things which they have provided me the information, it's really good, looking good, and even the event which they provided right now, it's really good. They conducted a very good environmental awareness to every people out here. They conducted several games like cleaning the garbage and separating the wet waste, garbage and dry waste and all. They conducted, and every people out here were so enthusiastically participating in the event out here. Sophia Academy, they provide different kinds of activities and they provide vouchers and gifts also, and they even provide few certifications out there who participated in the games out here. And also they have created so much awareness like beatboxing for World Environment Day, which is so important. Right now in the world there is deforestation, climate change, and no people are bothered to do afforestation, and this is a great effort out with this team which helps in afforestation, and also it protects our earth from ozone layer, which is a very important thing. They have done a great job and I'm extremely proud to be participated here. So thank you. My name is Saida Amra Fatima. I'm a student of 2nd PUC from Sophia PU Academy. We are doing an event on this Elements Mall. We are thankful to this Elements Mall management that they have given a wonderful place to give a special vital cause. And we are doing this event for public, that for in our environment day, World Environment Day, that how should reduce water, reduce wasting water, and saving earth, save the plants and save the water to our country. That we should management that our greenery should be very well. Thank you so much.